Today we'll talk about packing fraction and vacant spaces in a cubic unit cell. Packing fraction is basically fraction of volume or area occupied by the atoms of a unit cell. Atoms of a unit cell. कितना वॉल्यूम या कितना एरिया कवर करता है atoms in a unit cell, we call that packing fraction. Now, अब कैसे आप packing fraction determine करेंगे? ये डिपेंड करता है आपका जो packing है वो है क्या. Is that 2-dimensional packing or it is 3-dimensional packing? So we have in 3-dimensional packing fraction हम डिनोट करते हैं PF से. So PF will be equal to volume occupied by atoms divided by volume of unit cell. Atoms जो होते हैं इस यूनिट सेल में उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा है एंड हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उनको डिवाइड कीजिए, यू विल गेट द पैकिंग फ्रैक्शन और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एटम्स ने इन अ यूनिट सेल. दैट्स कॉल्ड अ पैकिंग फ्रैक्शन. And in 3 dimensionals, one thing you should understand that we are taking here volume. लेकिन जब हम 2 dimensional की बात करेंगे, so once we talk of 2 dimensions, in 2D packing fraction is equal to area covered by atoms divided by area of unit cell. So in case of 2 dimensions, we have the area, but in case of 3 dimensions, we take the volume into account. So volume occupied by atoms divided by volume of unit cell, that gives me the packing fraction for 3D. But in case of 2 dimensions, packing fraction is area covered by atoms divided by area of unit cell. That will give me the packing fraction in 2 dimensions. Now, how can we calculate it? Let's talk about first of all 3 dimensions. So we know that in 3D we have 3 types of packings. 3D में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग्स होते हैं. एक तो सिंपल होता है सिंपल क्यूबिक पैकिंग, दूसरा होता है FCC और तीसरा होता है BCC. So in simple cubic packing or a primitive lattice, we have number of particles equal to 1, but in case of face centered we have number of particles equal to 4. In case of BCC we have number of particles equal to 2. Now packing fraction is equal to volume occupied by atoms, volume occupied by atoms divided by volume of unit cell, जो मैंने अभी लिखा ये वाली फॉर्मूला. तो PF will be equal to volume occupied by atoms means volume of atom. एक एटम का कितना वॉल्यूम है मल्टीप्लाई कीजिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, दैट गिव्स मी द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है? सो वी हैव volume of atom is basically 4 by 3 pi r cube, because we are basically taking, हमारे पास ये क्यूबिक क्रिस्टल है. इस क्यूबिक क्रिस्टल में जो प्रिमिटिव लैट्स है इट्स हैविंग पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर्स. सो जो हम ये पार्टिकल होता है पार्टिकल इसमें वी टेक इट एज स्फीयर, तो इट विल बी टेकन एज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 by 3 pi r cube. R is the radius of sphere, multiply number of particles, since the number of particles means n, whole divide by वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स. आप ये एज लेंगे जो है यू टेक इट एज ए, एज लेंगे यू टेक इट एज ए. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ देन यूनिट सेल? इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट्स इक्वल टू ए क्यूब. सो दिस इंप्लाइज packing fraction will be equal to
4 by 3 pi r cube into n divided by a cube. This gives me the packing fraction formula. This is the packing fraction formula. Now you can apply it to the primitive lattice, to the simple face-centered cube, to the BCC also. So since we got the expression now, the expression is packing fraction in 3 dimensions is equal to 4 by 3 pi r cube. R is the radius of sphere, n is the number of particles, a is the edge length, that is this. So you can put the value here. For now number a हम लिखेंगे यहाँ for simple cubic packing, simple cubic or primitive lattice. So you have n equal to 1 and a equal to, हमने already discuss किया है relation between radius and length of edge. In case of primitive, you know that it is r is equal to a by 2, so a is equal to 2 times r. This we find earlier जब हमने पढ़ा था relation between radius of sphere and the length of edge. You can watch that video whose link has been placed in the description. Once you put the value here, you will get packing fraction equal to, that's 4 by 3 pi r cube into 1 divided by, इसका आप लिखेंगे 2r का whole cube. So once you solve it and remove r cube, you find that packing fraction will be equal to 0.523 and ये आपका packing fraction निकला. परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकलेगी आपको. परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी होगी फिर? So what is the percentage occupancy? That is 0.523 multiply 100. That gives you 52.3%. So itna 52.3% is occupied in case of simple cubic packing. A vacant space कितना रहेगा therefore? So vacant space is therefore जो आपका ये vacant space रहेगा, vacant space that is equal to 100 minus 52.3, that is approximately equal to 47.7%. 47.7%. This is the vacant space in case of simple or primitive cubic packing. So this is how you calculate the packing fraction. ये आप याद रखेंगे ये value. This is important as far as the competitive exams are concerned. Next, अगर आपके पास अब face centered cubic lattice होगा तो how can you find that? So for FCC, you know number of particles is equal to 4 and the relation between radius and the edge length is root 2 by 4 into a. Now once you put these values in the expression, so you have packing fraction equal to 4 by 3 pi r cube into number of particles is 4 divided by a, this divided by a cube. So once you put the value of a here, that's equal to 4r divided by root 2. ये वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो निकल करके आता है 0.74. So this is the packing fraction. Therefore percentage occupancy कितने निकलेगी? परसेंटेज ऑक्यूपेंसी मींस परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन. आप बोल सकते हैं परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन, या आप सिंपली बोल सकते हैं परसेंटेज ऑक्यूपेंसी. दैट इज इक्वल टू 0.74 मल्टीप्लाई 100. दैट केम आउट टू बी 74%. सो दिस इज बेसिकली द स्पेस दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड. तो वैकेंट स्पेस कितनी बची फिर? वैकेंट स्पेस दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 74. That's equal to 26% is the vacant space that has left. This is void, this is whole, this is called as interstitial site. Now for BCC, in case of BCC, you know the number of particles is equal to 2. Relation between radius and that of the length of edge is equal to root 3 by 4 into a. So once you put these values in packing fraction formula, you find that PF will be equal to 4 by 3 pi r cube into number of particles is basically 2 divided by a cube. So a आप यहाँ डाल सकते हैं. Once you find 4r divided by root 3, put the value here, you will get PF, that's packing fraction, approximately equal to 0.68. So this is the packing fraction. Therefore percentage packing fraction will be equal to 0.68 multiply 100. That came out to be 68%.
तो 68% आपका जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकला, देयरफॉर वैकेंट स्पेस कितनी बचेगी फिर? सो व्हाट इज द वैकेंट स्पेस? दैट इज इक्वल टू 100 minus 68, that is 32% is the vacant space in case of BCC cubic packing, body centered cubic packing. I hope you understand how can you calculate the packing fraction in case of three-dimensional packing. Now if you go by two-dimensional packing, so for two dimensions, for 2D packing fraction is equal to area covered by atoms divided by area of unit cell. Area covered by atoms in a unit cell. एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम या कितना एरिया कवर किया गया है एटम्स ने, डिवाइड बाय करना है यूनिट सेल का एरिया क्या है, दैट गिव्स यू पैकिंग फ्रैक्शन इन 2D. सो हमेशा याद रखना चाहिए, इन 2 dimensions you take area into consideration, but in case of 3 dimensions you take volume into consideration. This is important. One more point you should understand here is that in case of 2 dimensions you take circle instead of sphere. You take circle, atom as circle. You take atom as circle. And but in case of 3 dimensions, in case of 3D you take atom as sphere. This is important. तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है. तो since you are basically taking atom as circle, so you have to find the area of circle. This is important. So दो बातें आपको याद रखनी है. नंबर 1, in 3D, यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा ये 3D में आपको क्या याद रखना है, that is in 3D we take volume into considerations, volume of atoms and volume of unit cell, and you take atom as sphere. You take atom as sphere. ये एक बात. दूसरी बात, in 2D आपको याद रखना है कि you take area into consideration instead of volume. Number 2, you take atom as circle but not sphere. So you have to find the area of circle, you have to find here the volume of sphere because you take volume into consideration. ये दो बातें आपको याद रखनी है जिसकी वजह से आप easily प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कर सकते हैं. Now once we go for the 2-dimensional packing, let's take an example. Question is, suppose आपके पास ये एक पैकिंग है, find PF or vacant space and vacant space in following 2-dimensional packing. दिया क्या गया है, पैकिंग इस तरीके से है. So you have here इस इमेज का जो एज लेंथ है दैट इज इक्वल टू A, radius of sphere is basically R. So you are required to find the packing fraction of this particular figure. Packing fraction कितना है और जो है vacant space कितनी है ये, लेकिन packing जो है वो 2-dimensional packing है. So what you will do is you will find packing fraction equal to, so we know that packing fraction will be equal to area covered by atoms, so which means area of one atom multiply number of atoms divided by area of unit cell. ठीक, तो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ वन एटम. देखिए एरिया एक एटम का कितना है, हम आई टोल्ड यू ऑलरेडी that in case of 2 dimensions you take area into consideration and atom as circle. So एक एटम का एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल दैट्स पाई आर स्क्वायर. सो इसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर. ठीक, अब कितने एटम्स हैं वो हमें देखना है. सो इट इज पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम्स. अब नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे निकालेंगे, हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स. नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो एटम है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है टू द यूनिट सेल. यूनिट सेल स्क्वायर यूनिट सेल है. जब यूनिट सेल स्क्वायर है तो इस इतना पार्ट जो है, दिस इज द पार्ट दैट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एटम टुवर्ड्स यूनिट सेल, एंड दिस इज द पार्ट that is being contributed towards this unit cell, and this is again the part that's being used up,
and this is again the portion that is being used or contributed to the per unit cell. So it is 90, it is 1/4. अगर आप देखेंगे इस sphere, इस सर्कल का जो दिस एंगल है, ओवरऑल एंगल दैट्स इज 360, ठीक, डिवाइड बाय कितना कंट्रीब्यूट होता है, इट्स 90 डिग्री ओवर हियर, 90 डिग्री डिवाइड बाय 90 विच मीन्स इट इज 4. सो मीन्स वन एटम कंट्रीब्यूटेड 1/4 टुवर्ड्स इट. ये तो फोर्थ पोर्शन है, इट इज द फोर्थ पोर्शन विच इज कंट्रीब्यूटेड टू द पर यूनिट सेल. मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा पर यूनिट सेल, 1/4. सो 1/4 एक एटम कंट्रीब्यूट करता है. 4 एटम कितना करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 4. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल, सो n विल बी इक्वल टू 4. 4 पार्टिकल्स है लेकिन एक कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/4, दैट इज 1/4 इक्वल टू 1. सो इस वाले फिगर में, इस वाली पिक्चर में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर यूनिट सेल दैट्स इक्वल टू 1. कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 4 स्फीयर्स हैं, 4 सर्कल्स हैं, मीन्स 4 इज देयर, मल्टीप्लाई एक कंट्रीब्यूट करता है 1/4, तो 4 कितने करेंगे, 4 इंटू 1/4 दैट्स इक्वल टू 1. सो देयर इज ओनली वन पार्टिकल और वन स्फीयर और वी कैन से वन सर्कल इन दिस पर्टिकुलर फिगर. सो यू कैन पुट द वैल्यू n इक्वल टू 1 ओवर हियर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल. देखिए एरिया किसके बराबर, यूनिट सेल इज एक्चुअली हियर स्क्वायर. जब स्क्वायर यूनिट सेल है तो एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज इक्वल टू a इनटू a, दैट्स इक्वल टू a स्क्वायर, बिकॉज लेंथ ऑफ एज इज a, सो ये भी a होगा, इट इज स्क्वायर, सो a इनटू a इज a स्क्वायर. बट यू नो वन मोर पॉइंट दैट अगर आप ये देखेंगे a किसके बराबर है यहाँ, इट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो a इज इक्वल टू 2 times r. Also a is equal to 2 times r. You can put the value here also. So area of unit cell will be a square, and you know that it is pi r square divided by a is equal to 2r, that is whole square, because a is equal to 2r. कैसे पता चला, फ्रॉम फिगर. अगर आप देखेंगे ये रेडियस इतना है, ये भी रेडियस इतना है, so 2 times radius will be equal to this length of h. So once you put the value here, you will find it is pi r square divided by 4r square. R square will go. This is pi by 4. This is 3.14 divided by 4. That came out to be 0.785. तो ये जो वैल्यू निकला, this is the packing fraction. So packing fraction is equal to 0.785. This is the packing fraction. So percentage packing fraction or percent occupancy कितना निकला, that is 0.785 multiply 100, that came out to be 78.5%. and now vacant space कितनी बचेगी, vacant space is equal to 100 minus 78.5, that will come out to be roughly around, it's 21.5%. So this is the vacant space and this is the percentage occupancy. This is the packing fraction or occupancy of that particular unit cell. So इस तरीके से आप प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते हैं. एक और प्रॉब्लम हम लेंगे, we'll take one more problem. The problem is find vacant space in following 2D figure. आपके पास ये एक स्फीयर इधर है, तीसरा स्फीयर इधर है. So you have joined them like this. It becomes an equilateral triangle. Now the length of edge is given as a. Obviously radius of this sphere is r. This implies a will be equal to 2 times r. ये तो पहली बात है. It is given. आपको बोलना है कि कितना पैकिंग फ्रैक्शन इन एटम्स ने ऑक्यूपाई करा है and what is the vacant space. So what you will do is you will remember this is the 2D packing. So what is the formula? Formula is area covered. So area of atom multiply number of atoms divide by area of unit cell. Area of unit cell. तो area of atom कैसे निकालेंगे आप? Area of atom is again pi r square. So this is pi into r square multiply. अब n किसके बराबर है? This is important. अब देखिए जो ये स्फीयर है, it contributes this portion to the unit cell. This sphere contributes this the same portion to the unit cell. They again contribute same portion. अब देखिए सर्कल का कितना टोटल एंगल होता है, that is 360 डिग्री. डिवाइड बाई कीजिए. अच्छा ये जो एंगल यहाँ पे बना है, this is the triangle is equilateral. This is the equilateral triangle. equilateral triangle. तो equilateral triangle में एंगल कितना होता है, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री.
जब ये एंगल 60 डिग्री है तो डिवाइड बाय कीजिए 60 डिग्री, दैट केम आउट टू बी 6। मतलब ये कि ये जो एटम है, ये जो स्फीयर है, ये जो सर्कल है या फिर ये एटम है, ये कंट्रीब्यूट करता है, इसका छठा पोर्शन कंट्रीब्यूट होता है, छठा पोर्शन, विच मीन्स इट कंट्रीब्यूट्स 1/6। जब ये कंट्रीब्यूट करेगा 1/6 तो एक कंट्रीब्यूट करता है 1/6 पर यूनिट सेल, तो 3 कितने कंट्रीब्यूट करेंगे? सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू 1/6। एक कंट्रीब्यूट करता है, कितने हैं? 3, दैट्स इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो वो हाफ पार्टिकल है। सो इन ट्रायंगुलर वाइड वी हैव हाफ पार्टिकल। सो पुट द वैल्यू हियर 1/2, होल डिवाइड बाय कीजिए एरिया ऑफ यूनिट सेल। आपको पता है ये जो यूनिट सेल यहाँ पे बनी है दैट्स बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 into side square. Side is basically a square because area of equilateral triangle is always equal to √3/4 into side का स्क्वायर। अब आप जान सकते हैं कि साइड किसके बराबर है? एक साइड दैट इज a, तो √3/4 into a square। पुट द वैल्यू हियर। नाउ a किसके बराबर है? 2 times r, फिर r कैंसिल हो जाएगा। ये सॉल्व करके जो है आपका जो वैल्यू है दैट केम आउट टू बी 0.91। सो इन केस ऑफ दिस ट्रायंगुलर वाइड, इन केस ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस 2D, so the packing fraction is equal to 0.91, which means percentage packing fraction or percent occupancy will be equal to 100 multiplied 0.91, that is equal to 91%. So 91% is basically the space occupied, and vacant space कितने बचेगी फिर? That is 100 minus 91, which is approximately equal to 9%. So 9% is basically the vacant space left in that particular figure, in that particular 2D packing, that is this. अगर आप यही इस्तेमाल करेंगे for HCP in 2D, hexagonal closed packing, you will find the same value. So we can write here in HCP hexagonal closed packing in 2D, packing fraction is the same as triangular wide, that is equal to 0.91, जो अभी डिस्कस किया। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ, we can prove it. So परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितनी होगी फिर? परसेंट ऑक्यूपेंसी that will be 91%. वैकेंट स्पेस कितनी बचेगी फिर? That's equal to 9%. तो whatever we find, हम लोगों ने क्या फाइंड किया है? in case of this triangular void, in case of this figure, the value came out to be 0.9, that is this, and percent occupancy is 91%, vacant space 9%. Same is true for HCP, hexagonal closed packing in 2 dimensions. Same is true. How can we prove this? Let's have a look. So हमारे पास ये पिक्चर ऐसी है। So we have a picture like this. ये एक स्फीयर है, इसको टच कर रहे हैं 6 स्फीयर्स। तो this is the hexagonal closed packing. This is the hexagonal closed packing. अब आपको निकालना है कि what is the void space, vacant space, and what is basically the packing fraction. So what you will do is basically you will first of all join these, and packing fraction will be equal to, so we'll write it in some other color. Packing fraction will be equal to area of atom multiplied by number of atoms divided by area of unit cell. This is the formula. Now area of atom कितना होता है? pi r square. अब देखना है हमें length of edge we take as a, तो obviously a will be equal to 2 times r, because यहाँ और यहाँ जो है ये r है, ये भी r है, मतलब 2 times r will be equal to length of edge, that's a. Now a is equal to 2 times r. Now particle जो है, number of particles किसके बराबर होता है? अब area of unit cell किसके बराबर होता है? अब इस एरिया यूनिट सेल का एरिया कैसे निकालेंगे आप? यू ज्वाइन दिस विद दिस कॉर्नर, यू ज्वाइन विद दिस कॉर्नर। तो ये जो ट्रायंगल आपका बना, दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल।
जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? सो एरिया इज इक्वल टू 4 बाय √3/4. It is √3 divided by 4. Side square, side is again a, so a square. ये तो एरिया निकला इस वाले ट्रायंगल का, लेकिन इसी तरीके से कितने ट्रायंगल्स बनेंगे इसमें? इसमें 6 ट्रायंगल्स बनेंगे. आप देख सकते हैं ये एक और ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है, ये एक और ट्रायंगल है. दिस इज वन मोर ट्रायंगल. सो 1 2 3 4 5 6 6 ट्रायंगल ऐसे ही बन गए. सो मीन्स दैट इसको मल्टीप्लाई करना है आपको 6. दिस गिव्स यू द एरिया ऑफ यूनिट सेल, दैट इज दिस. सो एक ट्रायंगल का सेंटर स्फीयर में यहाँ जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्मॉल ट्रायंगल बनेगा. दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. साइड इज बेसिकली a, लेंथ ऑफ एज, a स्क्वायर. अब एक ट्रायंगल का इतना रेडियस है, इतना एरिया है, तब इसमें 6 ट्रायंगल्स बनते हैं. मतलब यूनिट सेल का एरिया कितना बनेगा? दैट इज √3/4 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 6. So this is how you can find the area of unit cell, that is √3/4 a square into 6. अब n निकालना है. n किसके बराबर है? देखिए ये जो एक स्फीयर है इसका टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री. सो दिस का एंगल होता है 360 डिग्री. डिवाइड बाय कीजिए आप, एंगल ऑफ हेक्सागन इज 120. जब हेक्सागन का एंगल होता है 120 तो डिवाइड कीजिए 120 से. दिस कम्स आउट टू बी 3. इसका मतलब ये हुआ ये जो एक स्फीयर है, ये जो एक सर्कल है, इट इज कंट्रीब्यूटेड 1/3 टू द पर यूनिट सेल. सो इट कंट्रीब्यूट्स 1/3 पर यूनिट सेल. तो n विल बी इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई एक एटम कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल 1/3. तो ये कितने हैं? 6 है, मल्टीप्लाई 6 प्लस ये जो बीच वाला स्फीयर है दिस कंट्रीब्यूट्स फुली टू द यूनिट सेल मींस 1. तो ये निकल कर क्या आएगा? 3 1s are 3 2s are, so number of particles will be equal to 3. So number of particles is 3 in this particular packing and area is equal to √3/4 a square multiply 6. कैसे निकला? I told you right now कि एक ट्रायंगल का एरिया है √3/4 a स्क्वायर साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई ये 6 ट्रायंगल्स बनते हैं मल्टीप्लाई 6. दिस गिव्स द एरिया ऑफ यूनिट सेल. एक बात, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे आप? ये जो पूरा एक स्फीयर है इसका टोटल एंगल होता है 360 डिग्री. अब ये जो एंगल बनता है इन हेक्सागन दैट्स 120. सो डिवाइड बाय कीजिए 120 से, दैट केम आउट टू बी 3. इसका मतलब ये हुआ ये जो एक एटम है दिस कंट्रीब्यूट्स 1/3 टू द यूनिट सेल. तो यूनिट सेल 1/3 जब 1/3 एक कंट्रीब्यूट करता है तो 6 कितने करेंगे? मल्टीप्लाई 6 प्लस इसमें एक और स्फीयर है दैट्स एट द सेंटर. ये वाला स्फीयर ये फुली कंट्रीब्यूट करता है पर यूनिट सेल का. दिस इज 1. सो 3 1s are 3 2s are, 2 + 1 is 3. दैट्स हियर 3. नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स in this unit cell is equal to 3 and area is this. Put the value here, you will get the packing fraction. So we have PF equal to, that is equal to pi into r square. Number of particles is basically equal to 3. ये जो निकल करके आया, area of atom is basically pi r square because you take area of circle divide by area of unit cell, that is this. So we have divide by √3/4 a square into 6. So a is here equal to 2 times r. Once you put the value here, you will came out to be again 0.91 and percent occupancy जो है that will be equal to 91%. Obviously, जो vacant space इसमें बचेगी vacant space, so that is equal to 100 minus 91, that will be 9%. So it's exactly the same what we find in case of a triangular void. इसका रीजन सिंपल है, ये जो वाइड यहाँ पे क्रिएट है ये भी ट्रायंगुलर है और ये जो वाइड हेक्सागोनल पैकिंग में क्रिएट हुई है ये वाली, ये भी क्या है? दिस इज आल्सो अ ट्रायंगुलर वाइड. सो दैट्स व्हाई द वैल्यूज आर सेम. That's why the values are same. So this is how you can calculate the packing fraction, whether you will be asked to find it in 2 dimensions or in 3 dimensions. So point to be noted is in 3 dimensions. In 3 dimensions, you will take volume into consideration, volume of atoms of unit cell, divide by volume of unit cell, and you take atom as sphere. So आपको volume of sphere निकालना है. In case of 2D, you will not take the volume, you will take the area covered by atoms of unit cell, divide by करना है area of unit cell, और जो atom है यह consider करेंगे as circle. So you are required to find the area of circle rather than area of sphere. So area of circle. ये 2 बातें आपको याद रखनी है. Then you can put the things into place and get the questions done. I hope you understand it. And
If you like my videos, please do not hesitate to share and subscribe my channel. I'll come up with more such videos, more informative videos. Till then, take good care of yourselves. Thank you very much.